Hello students, welcome to my channel, and now we are going to discuss types of seeds and types of fruits, how the fruits develop and what kind of fruit it is. Okay, so let's start with the animation. Seed. Whether a perispermic or albuminous seed, as the embryo begins to develop, the seed starts to mature and lose its water content to become relatively dry. A mature seed, therefore, has only 15 to 20% of its mass as moisture content. Moreover, the embryo's growth rate slows, and under unfavorable conditions, it may enter a state of inactivity called dormancy, during which the embryo develops an increased resistance to desiccation. Conversely, conducive conditions that provide favorable temperature and appropriate water awaken the dormant embryo, and the seed germinates, with the embryo developing into a seedling. This ability of the seed to germinate is called seed viability, and it varies across seeds of different species. The seeds of spinach, for instance, remain viable only for a year or so, whereas muskmelon seeds remain viable for 5 years. Did you know that excavations around the Arctic tundra region have led to the finding of seeds of Lupinus arcticus, which remained viable for 10,000 years before germinating and flowering? Seeds, a character unique to angiosperms, also offer many advantages to these groups of plants. Seeds have special mechanisms such as bursting or wings that help them disperse to new habitats, thereby allowing plants to claim new areas to propagate. In addition, the seed's tough outer coat protects the embryo from hostile environmental conditions. Upon germination, seeds also have a better survival rate. So you have already read Lupinus arcticus, which is Lupinus arcticus एक ऐसी स्पीशीज है फ्लावरिंग प्लांट्स की, यानी लेग्यूमिनस प्लांट्स की, यानी दालों में आते हैं। किसमें? लेग्यूम। जहाँ भी टर्म आ जाए लेग्यूम तो आप समझ लो लेग्यूमिनस की बात कर रहे हैं। लेग्यूम्स, राइट, जैसे आपके अरहर, ये सब क्या हैं? लेग्यूम्स में आते हैं। मटर, चने, सब लेग्यूम्स में आते हैं। ये आर्कटिक ल्यूपाइन या फिर इसको बोलते हैं सब एल्पाइन ल्यूपाइन होते हैं। ये बहुत ही पहाड़ी इलाकों में होते हैं, खासतौर ठंडे इलाकों में। तो ये होते थे 10,000 तक के इनकी वायबिलिटी देखी गई है लुपिनस आर्क्टिकस की। ओके, नाउ अभी आपने देखा डॉर्मेंसी, यानी कि डॉर्मेंसी का मतलब हुआ सिंपली सीड्स को काफ़ी टाइम तक ऐसे ही स्टोर करके ड्राई कंडीशन में रखा जा सकता है। ये उनकी डॉर्मेंट स्टेज है, और जैसे ही उनको उनका फेवरेबल कंडीशन यानी सॉइल, मॉइस्चर, एयर जैसे ही मिला तो वापस वो रीजनरेट कर सकते हैं, यानी जर्मिनेट कर सकते हैं। तो आपके सामने जो डायग्राम दिख रहा है ये एक जर्मिनेशन का है। स्लोली देखेंगे, ये एक सीड है, राइट, सॉइल में गिरा तो देखो इसके ये जो कॉटिलिडेंट्स हैं, कॉटिलिडेंट में स्टोर्ड फूड होता है साइड में, ऊपर से सीड कोट होता है, उसको बचाने के लिए होता है ताकि हार्श कंडीशंस में भी ये बचा रह सके। अच्छा, जिसको हम बोलते हैं हाइपोकॉटिल्स, यहाँ से क्या निकल रहा है? रूट्स। ये देखो ध्यान से, अभी हाइपोजियल कंडीशन है, हाइपोकॉटिल, ये इधर निकला शूट और ये निकला रूट। रेडिकल और प्लूम्यूल, प्लूम्यूल क्या दिखाएगा? शूट यानी स्टेम दिखाएगा, और जहाँ भी हम रेडिकल बोलेंगे वो रूट की बात कर रहे हैं। हाइपोजियल कंडीशन, हाइपोजियल मतलब बिलो द ग्राउंड। ओके, अब बात आई ये कॉटिलिडेंट्स हैं। कॉटिलिडेंट काम होता है इनको स्टोरेज देना, यानी स्टोर्ड, जब तक ये जर्मिनेट नहीं करते तब तक क्या देगा? ये प्रॉपरली खाना दे रहा होता है, यानी न्यूट्रिशन दे रहा होता है। और जैसे ही स्टेम में लीव्स निकल आते हैं, लीव्स निकलने पे क्या होगा है? सीधी सी बात है, जैसे ही लीव निकल आएंगे तो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि जो कॉटिलिडेंट्स होते हैं तब तक सपोर्ट करते हैं सीड को जब तक वो पूरी तरह से 1 से 2 पत्तियां निकाल नहीं देता, क्योंकि जैसे ही लीव्स जर्मिनेट हो जाएंगे प्रॉपरली तो फोटोसिंथेसिस अपने आप शुरू हो जाएगी, उनका फूड न्यूट्रिशन शुरू हो जाएगा। अब देखें आगे। As they are guaranteed nourishment by the cotyledons. As seeds are products of sexual reproduction, they help bring about genetic variations within plant species.
Genetic variations are the key to evolution and also help plant species adapt and survive in different. Plants has also got a kind of variation, and we call it genetic variation. Why genetic? Because they have the capability to reproduce in variable states. Every plant and every organism wants to evolve from its previous generation. So as to evolve from its previous generation, plants, maybe animals, have to reproduce sexually, rather asexually. That means an overall sexual reproduction is a cause of variation, and this is cause of evolution. Environments. Seeds, which help in the propagation of angiosperms, also form the crux of agriculture. Interestingly, farmers in recent times have started using hybrid seeds developed through artificial cross-pollination techniques. These seeds guarantee increased productivity and superior crop quality. However, when seeds born by hybrid crops are sown, the seedlings do not exhibit the hybrid characters due to the segregation of characters. सेग्रीगेशन होता है सेपरेशन ऑफ द कैरेक्टर्स. याद रखेंगे, हमने जब भी हाइब्रिड की बात की, हाइब्रिड मीन्स एक कैरेक्टर के साथ साथ दूसरा कैरेक्टर भी इन्वॉल्व हो जाए, तो क्या बोलते हैं? हाइब्रिड. हाइब्रिड विगर. अगर हमें हाइब्रिड सीड्स बनाने हैं तो हमें पहले प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए. जैसे बहुत सारे राइस की प्रॉपर्टीज़ चल रही हैं अभी मार्केट में, जिसमें हम पूसा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो गोल्डन राइस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बायोटेक्नोलॉजिकली प्रोड्यूस्ड हैं राइस, इनके बारे में बात करेंगे. जो हमारा चैप्टर होगा रिप्रोडक्शन और बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है हमारे पास, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वहाँ पे हम बात करेंगे आज के. तो ये है बेसिकली रिप्रोडक्शन प्लांट्स के. This forces farmers to purchase new hybrid seeds year after year, which is an expensive affair. To address this problem, botanists are trying to understand the genetics of apomixis and transfer apomictic genes into hybrid plants. Apomixis is a form of asexual reproduction in which the seeds or embryos are formed without fertilization. In fact, seeds or embryos. Note down the entire structure. This is apomixis. Avoidance of meiosis, avoidance of fertilization. Clear? ये जो तुम्हारा टॉपिक है ये एपोमिक्सिस है, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं कराते. Either developed from an unfertilized egg which did not undergo meiosis, or from the cells of the integument or nucellus. Botanists believe that, यानी कि जो अदर देन द जर्मिनल पार्ट, जो ओव्यूल के इंटेग्यूमेंट होते हैं वहां से भी एक नया पार्ट बना सकते हैं ना, तो इसे बोल देते हैं एपोमिक्सिस. converting hybrid crops into apomicts will prevent the segregation of characters in seeds produced by hybrid crops and thereby eliminate the need to purchase hybrid seeds every year, as the seedlings produced by the apomicts will resemble their parents genetically. Did you know that plants such as grasses and those belonging to the family Asteraceae and Rutaceae are common examples of apomicts? Moreover, in certain apomicts, such as Citrus jambiri, which belongs to the Rutaceae family, the nucellar cells surrounding the embryo sac divide and protrude into the embryo sac. Later, these cells develop into embryos, and hence a single seed contains more than one embryo. This phenomenon of having more than one embryo in a seed is called polyembryony. Polyembryony. Thus, though we have gained a lot of knowledge about the formation of seeds and fruit, there are many mysteries that scientists are still trying to unlock.